Hello everybody, my name is Rachana. Welcome to my channel or welcome back. This look today I'm gonna create this look. This is for the Rakshabandhan. This is like a very less product and how to get ready quickly. So if you want to watch this video, let's go to the video. Okay, so let's start. First, we will gonna start with a moisturizer. We're gonna moisturize our skin. I am basically done with my another skincare products. And if you want to watch this video, do let me follow on Instagram also. Thank you so much. My Instagram ID will be somewhere here. And let's start. Right now, I'm using Cetaphil moisturizer, which is very nice moisturizer. Let's start. Bans for the generous amount में हमको ये मॉइस्चराइजर लगाना है एंड दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन फॉर द डेली यूज एंड इसका एक हाई एंड रन में आप देखने चाहो तो दिस इज वेरी मच अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ एक और है सेरावे का आई विल डू बिग हॉल अबाउट व्हाट आई हैव upgraded in my skincare. This is of course my old skincare. I'm not like right now revealing anything. No, you need to keep watching my channel. Okay, next we're gonna use the sun heals sunscreen बहुत important है अगर आप स्किन पे कुछ भी नहीं लगाते हो अगर आप घर पे भी हो सिर्फ तो आई वुड प्रिफर अ मॉइस्चराइजर एंड sunscreen in my daily use, and this was recommended by my dermatologist, and I would suggest to keep check up with your skincare from your dermat. उनको आपके स्किन के बारे में आपसे ज़्यादा पता होना चाहिए तो प्लीज़ टेक द हेल्प फ्रॉम द डॉमेट वो जो भी सजेस्ट करे. वी कैन यूज 2 fingers रूल. ये बहुत रनी नहीं है और ये थोड़ा सा वाइट को छोड़ता है मेरी स्किन पे, पर इसको अच्छे से लगाने के बाद अब जब ये मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा तो लगाने के टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत फील होता है कि ये वाइट का जो भी थोड़ा बहुत छोड़ के गया है वो सारा अब्जॉर्ब होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि इसने कोई भी वाइट का छोड़ा है. So that's why I would recommend to check from your dermat because they know your skin better, what should suits you and what should not. I'm not promoting any kind of skincare or makeup from right now right here because I don't know what suits on your skin. This is for me. Yes, if you are living in my area, if you have a or combination skin, then yes, you can use whatever I'm using recommended by her, and I highly recommend it if you want to use a 50 plus PA plus UVA UVB IRI protection, oil free, anti-aging benefits, water and sweat resistant and non comedogenic, and this is ultra matte gel sunscreen. And in my body I use fixed derma sun protection. Of course वो अभी अभी बहुत हाइप होने लगा है, पर जब मैं यूज करती हूँ तब इतना हाइप नहीं था, पता नहीं क्यों, because of I guess Pitsvilla. Okay, so right now we need to little bit give a air to absorb some products in the skin. Till then we will hydrate ourselves, drink water. That is also one of the reason whenever I come back from any area I don't get breakouts, I don't have pimples. Keep drink water because it's very good for your own skin and your health. Okay, so let's get back into the video. So after everything is absorbed in my skin, we will gonna use a primer which is right now into Maybelline Fit Me Matte and Polish Primer. they claim that is the SPF 20 और जैसे कि रक्षाबंधन भी है और बाहर जाना भी रहेगा आपको या आपके आपके भाई के साथ आपको आउटडोर फोटोज वगैरह खींचनी है तो लाइक या यू कैन यूज इट. मुझे तो काफ़ी पसंद है ये वाला प्राइमर बिकॉज इट्स रियली क्लीन माई टेक्सचर. इट पोज में बहुत अच्छे से मिल जाता है
एंड मेरी एक और प्रॉब्लम है स्किन के रिलेटेड, लेट मी टेल यू। आई हैव अ ओपन पोज हियर, हियर एंड हियर। ओके, सो ये वाले पार्ट में मैं चाहती हूँ कि जनरस अमाउंट में प्राइमर का यूज़ करूँ अपनी स्किन पे। थोड़ा सा प्राइमर से मेरा कुछ नहीं होता। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अ color corrector. I'm taking insides palette again, and I am taking my own finger and I'm taking a peach color corrector today, which is here to avoid any kind of blackness around my eyes. Whatever I have here, pigmentation थोड़ा बहुत, थोड़ा सा जो pigmentation इधर उधर है वो सारा, और यहाँ पे मुझे लगा था वो भी हील होने वाला है, सो ऑफ कोर्स आई कैन कलर करेक्ट दिस। सो इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं आइदर ब्रश से या फिर कंसीलर ब्रश आप यूज कर सकते हो। जस्ट जेंटली डैब इट, डोंट ड्रैग। Okay, so we are done with her color correct concealer. I am using Too Faced का concealer, Born This Way multi-use sculpting concealer. This is, and I'm in the shade natural beige. Yes, so I forgot to tell you कि मैं पहले ये वीडियो डाल रही हूँ रक्षाबंधन का, because I'm a little bit late in editing and all. I just took a trip and मैंने बैक टू बैक 2-3 ट्रिप्स किए हैं, सो इस वजह से आई एम लिटिल बिट लेट इन एडिटिंग एंड राइट नाउ आई एम नॉट पोस्टिंग लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस ऑन यूट्यूब। ऑफ कोर्स मैं सिर्फ महीने में एक ही डाल पाई हूँ, पिछले महीने में मैंने काफ़ी सारी रील्स डाली, because that is like counterbalancing the audience, and thank you guys for 100 subscribers, that is also a big thing for me। like, मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे भी लोग पूछ रहे थे कि तुमको कौन देखेगा, और मेरे मन में भी ऐसे सारे डाउट्स थे। थैंक यू फॉर ऑल योर लव। सो ये वाला नायका का हॉल है वो मैंने देहरादून मॉल से लिया है, नायका अलग से सारे ब्रांड्स लिए हैं, तो वो आएंगे, वो हॉल भी आएगा। इस कंसीलर की एक खास बात है कि इफ यू आर यूजिंग हाई एंड कंसीलर्स देन you might not need any foundation if you have nothing on your skin, if you don't have any like skin problems, you don't want to use foundation for daily uses, definitely you should give your hands to the one good concealer which is like a little bit higher end, पर उसके ड्यूज भी बहुत सारे हैं, सो यू कैन चूज योर कंसीलर वाइजली। मैं आईलिड्स के अराउंड और आई इसके अराउंड थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे प्रेस कर रही हूँ, अभी इसको स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से स्किन में पूरा ऐसे बैठ जाए, और हम इसके साथ बाद में इसको ऊपर ऊपर तक भी ड्रैग कर सकते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कुछ, तो you can of course like drag it till forehead and all। ब्लाइंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है बट इट्स वर्थ इट, लाइक इट्स वेरी वेरी वर्थ इट। आप जितना ज़्यादा समय ब्लेंडिंग में लगाते हो, and we have excess, so we're gonna dab it over here everywhere, wherever excess is on my brush I'm picking it and dabbing it on my forehead also। I'm gonna take a beauty blender and I'm dabbing it all over on my face, so whatever like creasing area है जहाँ पे ये absorb नहीं हुआ है, powder brush, and we need a matte and polish, again normal to oily skin के लिए है, this is a
230 natural buff powder from Maybelline. कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे जो शाइन दिख रहा है और ये जो पूरा सारा सटल आउट कर रहा है वो, इट इज लाइक वर्थ इट. और हम क्रीज आउट भी करेंगे आईज पे, बिकॉज वी डोंट वांट आवर आईज टू क्रीज इट. फिर आई सेट कर रहे हैं. लुक एट दिस साइड एंड लुक एट दिस साइड. लाइक दिस इज needed. The after the foundation or concealer, you need to have a one setting powder which is in a powder form, क्योंकि ये जो आपके सारे क्रीमी प्रोडक्ट्स हैं उसको आपके स्किन पे बहुत सेटल आउट करने के लिए ही होता है. एंड ऑफ कोर्स आई विल यूज सम ऑन माय नेक. सो थोड़ा बहुत सा कंसीलर है, वो अगर नीचे है तो वो भी सेटल आउट हो जाए. Now my base is done. Just look at this. I have no pigmentation. Dark circles, what, dude? It's like very important if you have dark circles, and if you are using very high end concealers also, it will not gonna work until you correct it, right? This is the like point when you want to hide your dark circles or any pigmentation around your mouth, around your eyes, or somewhere else you have scars or anything. You have to do the color correction. The product from like launcher. uh, this is so beautiful products they make. I got it this from Dubai, पर मुझे पता नहीं यहाँ पे कैसे डिलीवर होता है, या फिर उनके पेज में भी ऐसा सच कुछ प्रोडक्ट्स का उनका टैग नहीं है. शेयर और लाचियर, I don't know how to pronounce it either, but this is like a not that popular brand. I don't know why. It's so underrated brand. इसका आप मस्कारा देखो, इसका ब्रो प्रोडक्ट्स देखो, इट्स सो फाइन. लाइक सो वी विल गोन ट्राई इट विथ वन ब्रो एंड आई विल लाइक शो यू. तो ये मेरा ब्राउज है, ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा है और ये यहाँ से फिलअप भी नहीं है, पर ये काफी फील है. ठीक है, सो वी विल गोन यूज दिस. Can you see how dark it is, like better than this? मैंने तो सिर्फ फिल किया है और अभी हम इसको थोड़ा सा ब्रश आउट कर लेंगे. Like you can clearly see the difference it is giving me. बहुत बड़े बड़े brows हैं मेरे and definitely looking pagal or something, but trust me, once we're gonna use the brow gel and it will settle everything. अब हम इसको करेंगे set. We will gonna use a L Clear Brow and Lash Mascara and we will gonna use it for our brows. So मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया है. After the brows, we will gonna use a blush. We will gonna use a powder blush. We are using a Maybelline Fit Me ka blush, which is in a shade wine. Yeah, it's 50 and it's wine. एक टेक्निक और है, अगर आपको लगता है कि आपके पास पाउडर ब्रश नहीं है और क्रीम ब्लश है, so you can use the back of your hand for the tip and you can like just dab it and you can then dab from the excess product from your brush to your cheekbone, so it won't look so patchy or something. For the eye makeup also, we're gonna use the eye brush and same blush for our eyes to just like we will gonna use a brown kajal. So in my waterline, I'm gonna tight line the waterline. Blend it out. And how to finish this look, let me tell you.
I will do my another eyes off camera and then we'll come back. Okay, so like I am done with both of my eyes, and you can see that lifted kind of look in my eyes. You can say reverse cat eye. Time for inner corners of, and we're going to use this palette and we will pick it up the golden shadow from here, and we will use it for inner eyes. That's it. So good. I am using this Lanchas mascara. Oh god dude, you need to check it out. यहाँ पे मैं कुछ नहीं पुट करूँगी, पर ये मैं यहाँ पे अपनी राइट आई पे मैं पुट कर रही हूँ मस्कारा. Just see, this is just a one stroke and giving me that curl, the lip, to the length, everything. Look at the two eyes difference. Like, लगता आपके प्यार में गिर गई भाई. don't forget your lower lash also. Look at the two different eyes. Like, can you see both of my eyes, and the mascara did what to my eyes? जब भी मैं कभी ऐसा कुछ प्रोडक्ट ढूंढती हूँ जो मैंने नहीं देखा या नहीं सुना, एंड विच इज़ लाइक अ गिफ्टेड टू मी, एंड इफ आई ट्राइड इट फील सो नाइस कि लोगों को क्यों नहीं पता ये सारी चीज़ के बारे में, लाइक सो वर्थ इट. और ये इतना ज़्यादा शायद प्राइजी भी नहीं है, क्योंकि ये ड्रग्सटोर ब्रांड से ही है एज फार एज आई हैव रिसर्च, क्योंकि ये कहीं भी इसका जिक्र नहीं है dude. Very less people knew about this, and the lady was in Dubai who helped my partner to pick this up. Thank you so much. And after mascara, the same highlighter which I have used for my inner corner, पुराने ज़माने का हमारा lip liner, that is it. The same combo which I would like to use. This is from a Clinique You, just to give a shine and fill my lip. That's it. And we will gonna use Blur's cosmetic. Don't touch my gloss lipstick. Okay, so we will quickly finish and set our face from Urban Decay All Nighter Setting Spray. So this is the final look. We're going to quickly change into our clothes. So yeah, this is the final look. That is how I look. And if you like this video, I would like to tell you, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for being here, being nice to me, and thank you for the 100 subscribers. It means a lot if you still try and do subscribe me, because where I want to be, you guys can help me. This looks so amazing and so minimal yet so glamorous and pretty. If you are trying any kind of this look, you can of course do tag me. My Instagram ID is somewhere here, and of course you can DM me if your account is also private. Bye. Happy Rakshabandhan.